Okay, guys, meeting will start within 10 minutes. Okay, so we will wait for others, then we will start. Good afternoon, sir. Afternoon. Okay, Arshad, we will wait for others. Okay, and within 10 minutes, then we will start this session. Fine, sir. Okay.
Okay, guys, we will wait more 5 minutes, then we will start our session. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, guys. Seems we need to start our session. Okay. So I hope I'm audible for all. Yes, sir. Okay, that's good. Yes, sir. Okay, so
before I'm gonna start explaining what is rat unknown, like what is the rat functionality. Okay, and I hope you know the what is the rat full form, the remote access Trojan, right? So yeah, before start this webinar, I'm gonna explain like who are the malware analysts and what we exactly do. Okay, and what are the benefits and what are the disadvantage for that thing, and what technology or what techniques and what tools exactly we need to learn. Okay, so yeah, so malware is basically we need to analyze on the samples. For example, if you get any executable file, when I say the executable file, I mean the exe file that can run in our system or in your phone. Okay, it can be the APK, it can be the executable, it can be anything. Okay, so there are two type of the formats. One is the PE format, which is stand for the portable executable, and the next is the non-PE. Okay, so as you can see on my screen, I have the PE file, and why I can say this is the PE file, because it's the portable executable file, and this is the, if we check the extension for this, it is the executable file, right? So, and the non-portable, and this we can say the non-portable file, which can be the any kind of the PDF and document files. Okay, so non-p basically those files not gonna run, basically those files just gonna open with another software, we can say that. Okay, so malware can come from anywhere, like can come from the non-p file and also from p files. Okay, and I hope you guys are comfortable with the English. If I need to change my accent, I mean the language, so please. So is it good to just explain in English? Anyone, please answer. Yes, sir. Yeah, Kindly continue. if you can do it in Hindi, that'll be nice. Or hybrid. Sorry, say again. If you can do it in Hindi, that'll be nice, please. Hybrid. Hybrid. Yeah, Hindi English would be nice. Okay, Mix it up. okay, हिंदी. Okay, ठीक है तो नॉन पी और पी समझ में आ गया. Okay, so basically this session is about, हम रैट पे एनालिसिस करने वाले हैं. ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल, and let's start to analyze this. So before analyze this, we have the lot of tools. हमारे पास बहुत सारे tools हैं basically. First of all, we have the TCP view for network analyze. ठीक है, यहाँ पे हम network को screen करेंगे. And next we have the process monitor. Okay, these are all for the dynamics, and we have the process explorer. Okay, and this tools basically shows us what file, कौन सी file execute और चल रही रन हो रही है हमारे system में. ठीक है, और प्रोसेस मॉनिटर जितनी भी प्रोसेस होंगी, जितनी भी एपीआई और रजिस्ट्री कीज रन हो रही होंगी, जितनी भी प्रोसेस हो रही होगी वहाँ पे, ये हमें शो करता है. ठीक है, अब इसको एनालाइज कैसे करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ द डायनेमिक. फर्स्ट वी गोना डू दी स्टैटिक करेंगे हम पहले. स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक में हम उस कोड को विदाउट रन, आई मीन रन नहीं करेंगे, बिना रन करे इससे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें हो वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टूल है विच इज कॉल्ड द पीई टूल. Okay, P Studio. So P Studio में basically हम क्या करना है, drag and drop करना है. Let's see what exactly. So as you can see, so जैसे ही मैंने drop करा वो sample. Okay, so हमारे पास यहाँ पे bunch of information आ गई यहाँ पे already. So पहली MD5 basically हमारे hashes हो गए, unique, we can say unique fingerprints, footprints. Okay, तो ये हो गए. तो हम बेसिकली इसके थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं. एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है वायरस टोटल के नाम से. सिंपल हमें क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी लाइन नहीं, कॉपी वैल्यू, एंड देन वी कैन पेस्ट ऑन द वायरस टोटल एंड वी कैन एग्जामिन दैट थिंग. बट वायरस टोटल से जो भी रिजल्ट मिलेगा, बट हम उस पर पूरे तरह से रिलाय नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ इट्स जस्ट ऑटोमेटेड जनरेटेड, राइट. और जितना भी हम हो सके मैनुअली इंफॉर्मेशन गेन करने की सोचेंगे. ओके, सो यहाँ पे एक माइंडसेट हमें बहुत रखने की जरूरत है, और माइंडसेट होना चाहिए कि हमें सारी चीजें एक सस्पिशियस वे में कनेक्ट करनी है, लॉजिकली कनेक्ट करनी है, और सस्पिशियस मतलब हर चीज को हमें देखना है कि हाँ भाई ये चोर है. ठीक है, कुछ ना कुछ कांड करने आया है, तो उस हिसाब से हमें देखना है. तो यहाँ पे
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारे पास होती है स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग्स को क्यों इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और क्यों देते हैं मालवेयर, बिकॉज ऑफ ये जो हमारी फायरवॉल होती है उसको बाईपास बहुत इजीली कर देता है। तो कोई भी लाइक सस्पिशियस कोड स्ट्रिंग्स के अंदर कोई भी मालवेयर स्क्रिप्टर, कोई भी हैकर लाइक स्टोर करा के, राइट करके और बाईपास कर सकता है फायरवॉल को, ठीक है। तो इस वजह से हम स्ट्रिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज जब वो स्ट्रिंग पास हो जाती है फायरवॉल से, देन आफ्टर दैट वो जो स्ट्रिंग है कहीं हमारी डेप्थ इन द मेमोरी में जाके वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, फिर उस चीज को एनालाइज करने के लिए हमें फिर जंप करना पड़ता है रिवर्स इंजीनियरिंग पे, ठीक है, विच इज नीड टू लर्न लाइक लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो वो बात का पार्ट है, but in this session we just gonna analyze the static and how we manipulate its behavior and how we can understand it's like how it actually behaving in our system without executing and with executing, ठीक है। So इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये सामने आ गई है पी स्टूडियो में, हैशेस मिल गए हैं विच इज द यूनिक, एंड ये हैशेस हमें हेल्प करते हैं कोई भी सिग्नेचर राइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये फाइल हमें सस्पिशियस, या फिर हमने बोल दिया कि हाँ ये मालवेयर है, और हमने एक स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना सबूत या स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के उस पर हमने इसको बोल दिया है कि ये मालवेयर है, देन अब इसके लिए हमें एक रूल्स राइट करना होता है। वो रूल्स राइट करने के लिए हमें हैशेस की जरूरत पड़ती है विच इज यूनिक फॉर दिस फाइल, ठीक है। सेम हैशेस दो फाइल के नहीं हो सकते, डिफरेंट ही रहते हैं बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ द इंपोर्ट्स आर स्टोरिंग इन दैट फाइल, ओके, ठीक है। सो और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेसिकली हमें mz दिख रहा है, एज यू कैन सी फाइल फर्स्ट बाइट टेक्स्ट विच इज mz एक एक्सटेंशन है, ये आल्सो इंडिकेट करता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। यहाँ से हमें एक रिकन्फर्मेशन मिल जाती है कि दिस फाइल इज एग्जीक्यूटेबल एंड आई एम डैम श्योर नाउ दिस इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल। एंड द मोस्ट second thing important हमारे पास है entropy, and I hope you guys know what is the entropy. Entropy is shows the disorderness inside the code, कि हाँ भाई कुछ डिसऑर्डरनेस चल रही है हमारे कोड में, वो पॉइंट आउट करता है। सो व्हेनेवर यू सी द 6.9 above, then just consider this is the packed, and you guys might be like thinking what is the packed mean. Packed mean कि एक एक्स्ट्रा कोड उसके साथ एम्बेड होके आ रखा है, ठीक है। पैक मीन्स मतलब कभी अमेजोन से गिफ्ट मंगाया होगा, या गिफ्ट इन द सेंस कुछ ऑर्डर किया होगा तो एक रैप करके आता है, बॉक्स के अंदर आता है, सो दैट्स व्हाट आई मीन, ठीक है। बाहर से कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। सो जब भी आप एंट्रोपी 6.9 के अबव होता है, दैट मीन इज वी कैन से इट इज पैक्ड फाइल। सो देयर इज अ सेकंड स्टेज गोना हैपन, ओके, वी कैन से दैट थिंग। And the next thing we're gonna note down the entry point. This information is very important for the code analysis, ओके। सो जब भी हम कोड एनालिसिस करेंगे ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी टू फाइंड आउट कि कोड हमारी जो हार्डवेयर है उसके अंदर कहाँ रन हो रहा है, क्या मेमोरी एलोकेशन दी है हमारे सीपीयू ने उसको, ठीक है। एंट्री पॉइंट कहाँ है इसका, बेसिकली रैम में कहाँ एलोकेट हुआ है, ठीक है, वो उसमें हेल्प करता है। Then next we have the file type, which is we already know, which is the MZ, an executable file, right? And the CPU architecture type, we have the 64-bit, and the graphical user interface, and we have the compile stamp, which is indicating where when it exactly compile. Okay, it is compiled on the 12th of September on 2021. Okay, so these information are important. Somehow you also can ignore those things, but whenever you do the job inside the company like Mindtree or Infosys or Kaspersky or McAfee, then when you guys writing the reports, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये राइट करना बहुत जरूरी है। इवन दी आर्किटेक्चर टाइप, और क्या टाइप है, एमजेड है, एंट्रोपी साइज क्या है, और हैशेस क्या है, ठीक है। Okay, so let's jump to the next very important things, which is the libraries. Okay, so libraries is nothing. Libraries is all the DLLs, and I hope you guys know what is the DLL. DLL is the dynamic link library. Okay, so कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होता है, उसको किसी ना किसी DLL की जरूरत होती है। तो DLL बेसिकली एक फंक्शनैलिटी कंटेन करके रखता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, आई होप यू गाइज प्ले गेम्स, जिसने नहीं खेला है डोंट वरी। सो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या गेम रन करते हो और रन करते कोई एरर मैसेज आता है कि DLL इज मिसिंग, ठीक है। अब वो मिसिंग एरर क्यों देता है, बिकॉज ऑफ वो फंक्शनैलिटी तुम्हारे सिस्टम में नहीं है, तो यू हैव टू डाउनलोड दैट काइंड ऑफ द फंक्शनैलिटी इन फॉर्म ऑफ द DLLs, ओके। तो
DLLs यहाँ पे स्टैंड फॉर दिस फंक्शनैलिटी कंटेन करता है, ठीक है। अब तो आप लोग ये सोच रहे हो कि DLL कैन रन स्टैंड अलोन। माय आंसर इज नो, इट वॉन्ट रन स्टैंड अलोन बिकॉज इट्स नॉट अ सॉलिड प्रोग्राम। ये सॉलिड प्रोग्राम नहीं है हमारा, ओके। जो भी नए आए हैं गाइस, आई विल रिपीट द सेम थिंग, ओके, विद इन 5 minutes, ओके। सो ये जो DLLs है स्टैंड अलोन नहीं है, एक सॉलिड प्रोग्राम नहीं है। DLL सिर्फ प्रोवाइडिंग अ फंक्शनैलिटी or a supportive file to this executable file, this one, okay. So this rat dot unknown is taking these kind of the DLLs, and these DLLs giving a functionality to this rat to executing or functional val in our systems, okay. So let's move on. These kernel 32.dlls and the nsvcrt.dlls and user 32.dlls, if you guys thinking about what are these, sirs, then I will suggest you there are thousands, or I think millions of DLLs, I guess, because of there are lot of tools nowadays. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे DLLs जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो कोई भी अगर DLLs आपको मिलता है, सो आई विल सजेस्ट यू जस्ट सिंपली ओपन द गूगल एंड राइट दैट DLLs एंड यू विल फाइंड आउट इट्स फंक्शनैलिटी। आप वहां से रीड कर सकते हो, बट रीड किस फॉर्म में करना है? रीड इन द सेंस की सस्पिशियस वे में, कि हाँ इस DLLs की ये फंक्शनलिटी, फॉर एग्जांपल कर्नल 30 यूजर 32.dls, ठीक है। इट सेज अ मल्टी यूजर विंडो यूजर API, ओके। सो वी कैन लाइक थिंक लाइक, ठीक है, इसने मल्टी यूजर को मल्टी यूजर टाइप की फंक्शनलिटी है, तो इट माइट गिविंग एक्सेस टू समवन एल्स, और इट इज क्रिएटिंग अनदर यूजर इन आवर सिस्टम, ठीक है। इस टाइप से सोच के चलना कि ये API कुछ गड़बड़ क्या कर सकती है, ठीक है। तो मालवेयर एनालिसिस का काम यही होता है कि जो भी लिजिट फाइल भी है, तब भी हमें उसको एक सस्पिशियस वे में देखना है कि हाँ भाई ये क्या कर सकता है, बेसिकली क्या गलत कर सकता है, ओके। सो हाँ, वन मोर थिंग, अगर कभी भी फॉर एग्जांपल 2 3 या 4 और 5 और 6 DLLs दिखते हैं, दैट मीन अगर कुछ बंच ऑफ DLL दिखते हैं, दैट इज इंडिकेशन ऑफ दैट फाइल इज अ मैलिशियस। क्योंकि कभी भी कोई लिजिट प्रोग्राम होता है तो वो बहुत सारे DLLs यूज करता है, फॉर एग्जांपल 50 60, राइट। सो ये सब DLLs यूज करते हैं। अब कोई भी सैंपल, इन द सेंस नॉट द सैंपल, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी PDF है या कुछ भी है, ठीक है, EXE फाइल है, P और नॉन P फाइल है, अगर वो कुछ DLLs यूज कर रहा है, मतलब एक और या दो या तीन, दैट मीन दैट इज ट्राइंग टू मेक लेस नॉइस इन आवर सिस्टम। लेस नॉइस इन द सेंस की ज्यादा मतलब वायलेंट ना होके वो अपने आप को बस 2 3 प्रोसेस में ही काम खत्म करना चाह रहा है, जिससे कि हम वो नोटिफाई ना हो हमको, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होता है। सो कभी भी 2 3 मिले तो you can say, yeah, this is the suspicious thing, okay. And the functions, we have 68 functions including this libraries. So they, ये वाले जो 68 फंक्शन आपको दिख रहे हैं, ये रिलेटेबल है हमारे लाइब्रेरी से, तो इन सब की फंक्शनलिटी होगी हमारी, ये जो कर्नल 32 एंड SVCRT एंड यूजर 32, सो ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाली फंक्शनलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे P स्टूडियो का हमारा एक अपना डेटाबेस होता है, लाइक कोई भी एंटीवायरस का डेटाबेस, ठीक है। सो वो क्या करता है, कंपेयर करता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे डेटाबेस के अकॉर्डिंग क्या चीज यहाँ सस्पिशियस है, तो वो इस टाइप से फ्लैग मार्क करके तुम्हें दिखा देता है कि हाँ कि ये इस चल रहा है हिसाब किताब। गेट करंट प्रोसेस ID, दैट मीन इज सीम्स सस्पिशियस टू इट, बिकॉज इट इज गेटिंग अ करंट प्रोसेस ID। अब प्रोसेस ID, जो प्रोसेस ID मतलब जो भी प्रोसेस रन हो रही है CPU में, उसकी एक ID जनरेट होती है। तो क्या कर रहा है कर्नल 32.dl, उसको मतलब कॉल कर रहा है कि ठीक है मेरे को ये प्रोसेस ID चाहिए, देन इट्स सेइंग द गेट current thread ID, and I hope you guys know what is the thread. So let me just explain what is the thread in just short form. So let me just hold on. Okay, just give me just 1 second. Okay, I can find a note that I can write on the screen. Okay, no worries. So
let me just explain thread होता क्या है. Thread basically for example हमारा CPU है, कर्नल है, and then हमारी रैम है, ठीक है. अब जब भी CPU रिकॉल करता है कोई भी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, वो कर्नल को देता है, ठीक है भाई कर्नल ये रहा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू स्टोर एंड एलोकेट इनसाइड द रैम फॉर टेम्पररी पर्पस, ठीक है. सो वो प्रोसेस आईडी वहां जनरेट होगी, जो वो प्रोसेस आईडी और जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं दैट कॉल द थ्रेड. अब एक हम अलग अलग थ्रेड को एनालिसिस करते हैं, बेसिकली इसी को हम थ्रेड बोल सकते हैं और इसको एनालाइज करने को हम बोलते हैं थ्रेड एनालिसिस, ठीक है. Okay, so let me just repeat from starting because we have a lot of people join here, so they might be wondering like what is happening. Okay, so मैं repeat करता हूँ starting से. So basically we are doing the malware analysis on the rat. हम rat की functionality absorb करने के लिए ये session चला रहे हैं. Okay, so जो rat की functionality है हम in form of the static और dynamic और एक hybrid होता है, और hybrid में basically हम बोल सकते हैं सैंड बॉक्सिंग का यूज करते हैं, ठीक है. सो स्टैटिक क्या होता है हमारा? स्टैटिक हम विदाउट एग्जीक्यूट करें उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उससे वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. कोई भी सैंपल हो गया. सो देयर आर टू टाइप ऑफ फाइल, द पी फाइल एंड द नॉन पी फाइल. पी फाइल बेसिकली द पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, नाम से ही क्लियर है, एनी काइंड ऑफ फाइल दैट कैन रन मीन्स exe फाइल, और इट कैन बी एनी एक्सटेंशन दैट कैन ओपन एग्जैक्टली लाइक अ सॉफ्टवेयर, ठीक है. And non-PE means कोई भी document file, PDF file. Okay, so those are the non-PE files, and those both file can contain malicious thing inside. Okay, वो कैसे find out करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है static, dynamic. We just doing this static. Static mean without executing. We are trying to getting informations or extracting the information from it. Okay, so okay, okay, just give me 1 second. Okay, so yeah, so after that we just analyzing this thing user, and in this page we are getting the information, and if anyone interested to tell me what are these, is there anyone can explain what are these, what we discussed exactly? Properties of the file Yes, that we property are of the trying to file. analyze. Okay, good. So these are the properties we can say. Okay, so these are the hashes, and these are the mz executable, that is indicating these that file is executable. And entropy, can someone explain what is the entropy? How much noise is there in the code? I mean, how much code is not fitting into the normal scheme of things? Okay, pretty good. Anyone else? Okay, I think no one. So entropy, as Milan explained, like it shows like what like in the very simple definition, it just shows the more disorderness, कि कितना disorderness है, कि packed file है या नहीं है, ठीक है. अगर ये 6.9 से above है, that we can say that is containing a disorderness code or embedding some extra code itself. Okay, so we can say it is packed file. Okay, and architecture is a 64-bit and file type executable and subsystem graphical user interface, and then we have the compiler stamp. Whenever it compile, it is compiled onto 2021. Okay, and yeah, we forgot about to explain the indicators. Let's discuss about that thing. So indicators basically क्या होता है? Indicate करता है कि हाँ भाई क्या क्या suspicious चीज इसने find out कर रखी है और क्या क्या indicate कर रहा है ये program, ठीक है. So let's discuss about this thing. So as you can see, we have the indicators here, and we have 38 indicators. Okay, and strings, according to this, strings are flagged up. 45 strings are the suspicious according to the P Studio database. Okay, so we're not gonna rely on the P Studio database. हम अपनी ही end से मैनुअली एनालाइज करेंगे, ठीक है. पी स्टूडियो जो बोल रहा है, ठीक है. वी जस्ट कैन आल्सो एब्जॉर्ब दैट थिंग, ठीक है. वो आपने डायलॉग सुना होगा, डायलॉग तो नहीं है, मुहावरा है कि सुनो सबकी करो मन की. तो सिंपल सेम थिंग, इसकी भी सुनो, बट हमें अपने तरीके से भी एनालाइज करना है.
Okay, so we have the 45 strings. So okay, that is quite suspicious. Functions name 7 and the level is 1. Okay, यहाँ पे हमें level दिख रहा है और हमें क्या suspicious दिख रहा है यहाँ से. Let's see the entropy. Okay, value 4.8 and it is level 2. But as we know, if it shows above 6.9, then we can say that is the packed. But for me, it's not packed. But see, according to the P Studio, it is on the level 2, which is the highly suspicious. But for me, it's not that thing. I mean, not that much. Okay, let's see what else. Exception, we can say function exception, and I hope you guys know what is exception handling. कुछ भी error आता है उसको किस तरह से handle या tackle कर सकता है ये जो भी executable file है. ठीक है, so we can say exception handling is there. And target OS target window anti 4.0. ठीक है, window जो target है exactly इसका window anti 4.0 है. ठीक है, which is ठीक है quite suspicious for me because it is targeting at least a specific OS. Okay, and what else we can say? Execution we already saw, and we saw the another things which is highly suspicious for me, which is the functionality here you can see on the network. So whenever you see the network, that mean it is gonna use some kind of a network or traffics, or it trying to ping something in our network. Okay, so that is quite suspicious. So we can say yeah, this is suspicious, and this is fall in the network based indicators. Okay, and what else? Let's see. ASLR is off. I hope you guys know ASLR. So ASLR is the address space layout randomization. Okay, so it's just nothing. It's just storing our like it's just doing the allocation randomly in our system. Simple. Okay. And yeah, everything is here. Seems fine. I just find 1 or 2 to 3 thing suspicious. Okay. So हर एक चीज को आप कनेक्ट करके देखना कि हाँ क्या सस्पिशियस आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और सस्पिशियस है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एक्सचेंज, नो वन पॉइंट आउट द डेटा एक्सचेंज, इट माइट एक्सचेंजिंग सम डेटा like between the executable file and between our systems. Okay. Okay, so let's jump on the, so there is a virus total result, but in this virtual machine, I didn't run the network. I'm just working on the isolated network. So I'm not going to explain this one. Okay. These are the DOS header, DOS stub, file header, optional header. These are the code level analysis. When we need the code level analysis, तब हमको ये जरूरत पड़ेगी. ठीक है, so for now we just gonna skip because we are just absorbing its behavior. The session is about how we can analyze the rat behavior. जो उसका behavior है, किस तरह से behave कर रहा है, किस तरह से execute करने जा रहा है, वो हम देखना चाहेंगे. Okay, so after that we jump on the libraries. Can anyone trying to explain what are these libraries indicating? Anyone? No one. Okay, लगता है सबके ऊपर से जा रहा है. Okay, no issue. Okay. Okay, so kernel 32.dls and these all the DLLs are basically dynamic. Okay, anyone know the DLL's full form? I hope I'm Dynamic link library. okay, very Dynamic good. link library. Very good. Okay, so dynamic link library, is it standalone program or not? Just I need yes or no answer. Anyone except Milan? No, it's a library. Sorry. Oh, okay, clap for him. Okay. Okay, so this is the not a standalone. Okay, it need us some file, it need us some extra executable P or non-P file to run because of it just containing the executable, I mean not executable, I mean the functionality inside it. Okay. Okay, so we have a lot of DLLs you know nowadays. So if you are like worried and if you don't know what is that DLLs exactly doing, okay, simple Google करो, DLL टाइप करो and you will get the information and functionality, उसके बारे में पता चलेगी कर क्या रहा है. ठीक है, so इन 3 DLLs की functionality हमें यहाँ से पता लग सकती है कि हाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या functionality provide कर रहा है. So P Studio के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने 7 flags क्या कर रखे हैं, अप कर रखे हैं. इसके अकॉर्डिंग 7 flags क्या है, सस्पिशियस है, और उसमें से 6 है कर्नल 32.dls में, 1 है MSVCRT में, which is the get environment. Okay. Okay, we can say that is quite suspicious, but I'm not gonna give that much weightage on those things. मैं अपने तरीके से analyze करना पसंद करूँगा, which is the delete critical section. It is deleting some sections
which is really I think not normal because it's asking to delete some sections in our system. ठीक है. एंड व्हाट एल्स, वर्चुअल एलोकेशन. ठीक है, वर्चुअल एलोकेशन करेगा. ऑब्वियसली जब कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो वो एलोकेशन करता है उस प्रोग्राम को हमारे सिस्टम में, रैम में. ठीक है, टेम्पररी कि रन हो सके. ओके, देन लेट्स लुक मोर इन डेप्थ. गेट करंट प्रोसेस. ओके, इट इज गेटिंग सम करंट प्रोसेस. जो भी करंट प्रोसेस चल रही है उसको ये आईपी आईडी ले रहा है, उस प्रोसेस को ये कॉल कर रहा है बेसिकली. ठीक है. एंड व्हाट एल्स. Okay. Okay. Message box A user 32. Okay. We can say, we can note down this thing. We will see. For me, it is a bit suspicious. Okay. So you have to analyze by in your way, like logically. You have to think logically, like what like क्या गलत जा सकता है इसके साथ. ठीक है. And now let's, okay, TLS is really interesting thing, that is jump. TLS एक section है basically. ठीक है. TLS होता क्या है, थोड़ा डेप्थ में बता देता हूँ. जब भी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल या कुछ भी रन होता है, ठीक है, सो एज अ मालवेयर एनालिसिस हम क्या करते हैं, एक एंट्री पॉइंट को बेस मानकर हम वहां से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो हम मान लेते हैं कि एंट्री पॉइंट ही हमारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट है, एंट्री पॉइंट है हमारे सिस्टम में. ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ है एग्जीक्यूट होना. बट जब भी टीएलएस अगर प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल हियर, सो वी हैव टू लुक एट द टीएलएस लोकेशंस आल्सो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि मालवेयर स्क्रिप्टर बहुत स्मार्ट होते हैं. वो क्या करते हैं, एंट्री पॉइंट तो दिखाते हैं, बट एंट्री पॉइंट से पहले टीएलएस कॉल बैक में वो अपना पेलोड ऑलरेडी जनरेट स्टार्ट कर देते हैं. तो एग्जीक्यूशन हमारी टीएलएस कॉल बैक लोकेशन से स्टार्ट हो जाती है. तो मालवेयर एनालिसिस क्या करते हैं, ब्लफ में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं कि हाँ एंट्री पॉइंट्स हम कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं, बट समहाउ वो क्या है, टीएलएस लोकेशन से ऑलरेडी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब काम पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, बट वी आर जस्ट एनालाइजिंग बिटवीन द कोड. So this is why the TLS callback is really important. Okay, so TLS हमारे पास लोकेशन है, ये रही 00141 and the section name is the dot text. And dot text एक section है. So there are a lot of sections in any kind of the exe file, or we can say the PDF file, or a non-P file, sorry. So section are the most important things in the malware analysis, but this is the part of the theoretical. Okay. And let's look at the strings. So strings, we have 13,691. So there are a lot of, so we can't analyze one by one, right? So there are one trick that then how we can analyze those strings and how we can extract the information from it. कैसे information को हम बाहर निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या चीज हमें सस्पिशियस ढूंढनी है. ठीक है. सो बिफोर दैट हमको दो चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, विच इज इंडिकेटर्स, IOCs. पहला हमारा है नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स, दूसरा है हमारा होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स. ओके. सो होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स में हमारा क्या होता है, होस्ट से रिलेटेड, मतलब हमारे सिस्टम में जो भी चीज स्टोर होने वाली है इसके थ्रू. फॉर एग्जांपल इट कैन बी एनी काइंड ऑफ द न्यू मॉडिफिकेशन इन द DLLs. ठीक है. और कोई भी हमें अगर फाइल पाथ दिखता है, ठीक है, कोई भी हमें ड्राइव के अंदर कुछ भी ड्रॉप होते हुए दिखता है, या कोई भी EXE फाइल दिखती है, ठीक है, तो ये आते हैं हमारे होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स में. ठीक है. तो हमको नोट डाउन करके रखने होते हैं, बिकॉज वी गोना रिकन्फर्म इन जब हम डायनेमिक करेंगे. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव दी नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स. नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स नाम से ही क्लियर है. इज एनीवन इंटरेस्टेड टू टेल व्हाट इज द नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर एक्सेप्ट मिलन? एनीवन? I think no. Okay, Milan, you're up if you want. I have no idea, sir. Sorry. Okay. So guys, please speak, say something. If you don't know, then say no, sir. No, I'm sorry. At least, let me just tell you, the students, like students, पता है अब कोई भी क्वेश्चन कुछ भी थ्रो कर सकता है रियली. ठीक है. और ऐसा नहीं सोचना कि बेइज्जती हो जाएगी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर और हमें नहीं आता, तो इट्स गुड टू बी क्वाइट. जस्ट स्पीक आउट. नहीं आता तो बोलो नहीं आता है. अगर कुछ उल्टा फुल्टा भी समझ में आ रहा है, देन या यू हैव टू स्पीक, बिकॉज स्टूडेंट की वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती है. बट सिंपल सीधी सी बात है कि यू डोंट हैव टू बी शाय. ठीक है. एक भिक्षुक और स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल ओपन माइंडेड रहते हैं कि जो सोचेगा सोचने दो. बट आपका काम क्या है, नॉलेज गेन करना है. आपको क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है. सिंपल सीधी है, पढ़ने के लिए आने हैं,
then you have to ask the questions and you have to try to, answer those questions, try to learn those things. Okay, so नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स नाम से क्लियर है, नेटवर्क बेस्ड. सो कुछ भी हमें दिखता है, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि कनेक्ट, सेंड, सेलेक्ट, गेट, एंड आई होप यू आर फेमिलियर. गेट क्या होता है? गेट पोस्ट मेथड होता है हमारे नेटवर्क बेस में, राइट? सो यहाँ से ये हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स है, इट्स सेंडिंग समथिंग, माइट बी ऑन दी ओवर द इंटरनेट और ओवर द नेटवर्क्स. ओके, इट इज सेलेक्टिंग समथिंग. ओके, आई वांट टेक दिस इन द नेटवर्क. Okay, so get is the request method. It is requesting something over the internet. Okay, and we have again the port, and which is the registry is containing this one. So this is fall in the network based indicators, or any kind of the HTTP user agent, any kind of the URL, right? So वो सब fall करेंगे हमारे network based indicators में. Okay, clear है ना? So now we have the 13,691 strings. So it's quite difficult to analyze one by one. So we have the tools called the floss. Okay, तो floss को हम use कर सकते हैं. Let me just try to use the floss. Okay, let me just, okay, we have floss.exe. ये tool क्या करता है? Basically जितनी भी strings होंगी ना, वो उसको हमें एक फॉर्मेट में दे देगा, एक टेक्स्ट फाइल में दे देगा, फिर हम वहां से इजीली देख सकते हैं. So let me just type floss. What is the name of that thing? Red dot unknown. Where is it? This one. Okay, and name, let's say the shush.txt, and it's just gonna save the file. And as you can see here, this says documents created. And if we open that file, and we are able to see all these strings, right? So एक easy हो जाता है हमारे लिए कि हम easily search कर सकते हैं. For example, Control F करके find कर सकते हैं. होस्ट बेस मैंने बताया था, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल या कोई भी पाथ या कोई भी ड्राइव हो सकती है. सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट exe file .exe. So if you have any exe file, it will pop up. As you can see, it is showing us exe. So this is the ms core dll.exe is trying to dropping in our system. Okay, and if we look more up, no soup for you, which is weird message for me, and it said online, what command can I run for you? ठीक है, we have the user 32, kernel 32, we have the message box, internet open, this is the API calls. Okay, so these are the suspicious thing according to me, and this is the host based indicator. and यहाँ पे हमें network based indicators भी दिख गया, which is the HTTP client. ठीक है, so मैं यहाँ से अब डैम श्योर हो गया हूँ कि हाँ ठीक है, ये इंटरनेट यूज करने वाला है. मैंने होस्ट बेस्ड भी इंडिकेटर फाइंड आउट कर लिया, नेटवर्क बेस्ड भी इंडिकेटर फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, so we have two type of exe यहाँ पे, which is this one and this one. So we have to find out in the dynamic. So we have to note down all the things. Okay, so एक हमारे पास path भी मिल गया, ऐप डेटा करके कुछ, स्टार्टअप करके कुछ मिला है. ठीक है, we gonna also note down this. और HTTP सर्वर एक URL मिल गया .local करके. ठीक है, we also gonna note down this thing. It is the network based indicator. ठीक है, so इनको हमें क्या करना है? रिकन्फर्म करना है एक डायनेमिक में. ठीक है, हमें ये सब कुछ मिला है, और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे? एक्सेप्शन सर्च करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन फिल्टरिंग, अनहैंडल. ओके, सो एज वी कैन सी ऑन द पी स्टूडियो, हमने डिस्कस करा था कि इंडिकेटर्स में हमें एक्सेप्शन भी दिखा था यहाँ पे. सो इट इज हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी कि हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकता है, इन द सेंस कि कुछ भी एरर आएगा तो एक एरर मैसेज बॉक्स दिखा देगा, जो भी हिसाब होगा. इस तरह की फंक्शनलिटी भी इसके अंदर है, प्रेजेंट है. ठीक है, सो व्हाट एल्स? HTTP हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. ठीक है, HTTP, let's go up a bit. HTTP 2 3. so from here we can say हाँ ठीक है, हमको पता चल गया कि यहाँ पे नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर है, इंटरनेट यूज करने वाला है ये डेफिनेटली. ओके, what else? We have already connect here, so we don't need to find out that thing. So ये और क्या कर रहा है? ये यूटिलिटी कोड को डीकम्पाइल कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उसके अंदर कोड है रैट के अंदर, नहीं, मतलब ये डीकम्पाइल क्या? नहीं. ये बेसिकली हमने क्या करा है, एक उसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, एक जो रॉ डेटा होता है ना, रॉ डेटा मटेरियल,
वो एक्सट्रैक्ट करा okay. है हमने उससे विदाउट एग्जीक्यूट। ठीक है, अब डीकम्पाइल करना है तो फिर हमें let me just show you, there is a cutter tool. Okay, cutter tools help you a lot. Okay, it take time. Okay, CUT, sorry. So सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एंटीवायरस ने इस फाइल को आइसोलेट किया एंड देन वी स्टार्ट एनालाइजिंग इट, या कैसे होगा, मतलब हाउ डू वी फाइंड? Okay, so how do we find that thing? Okay, so देखो जब भी कोई भी सैंपल है, सस्पिशियस सैंपल है, then you have to like stable your isolated lab as I did. I have a Kali Linux and I have a Windows 10 and both are connected on an isolated network. Okay, मैं काली से पिंग करूंगा विंडो को, विंडो पिंग करेगी, बट दे नॉट एबल टू पिंग आउटसाइड ऑफ द दिस नेटवर्क। ठीक है, मैंने एक आइसोलेटेड नेटवर्क बना दिया है, एक आइसोलेटेड लैब बना दिया है, फिर इसके बाहर मैं इसको एग्जीक्यूट भी कराता हूँ ना, अगर डजंट मैटर, इट्स रैंसमवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो भी गया ये, देन मैं इतना वरी नहीं होऊंगा बिकॉज ऑफ इट्स जस्ट आइसोलेटेड लैब। आई कैन रीबिल्ड माय आइसोलेटेड लैब सिंपली। सो So मेन your मशीन, your device is connected to a LAN, that is okay, but आपके मशीन पे आपने ये VMs यूज करके एक आइसोलेटेड लैब बना लिया, मतलब राइट इज इट? ओके राइट, ओके ठीक है। सो यहाँ से हमें कंफर्म करना पड़ता है कि बाहर ना जाए हमारे सिस्टम से। ठीक है, मेन मशीन में ना जाए, मेन मशीन में अगर गया तो इट्स अ गेम ओवर फॉर यू। ओके। सो जो वर्धन बता रहे थे कि हम जो उन्होंने वो वहां से डाउनलोड करवाया था, गेट इनटू पीसी से एक विंडोज का ओएस डाउनलोड करवाया था, वो इसीलिए करवाया था कि हम अपने वर्चुअल बॉक्स पे एक काली इंस्टॉल कर लें और एक विंडोज इंस्टॉल कर लें, और ये दोनों आइसोलेटेड हो जाएंगे हमारे मेन सिस्टम से। सो दिस विल बिकम हाँ, अ सैंडबॉक्स इन इटसेल्फ, लैब फॉर टेस्टिंग। नहीं? या वी कैन से दैट, ओके। but in point of view of for malware analysis, then we have to set up the isolated lab. I mean isolated lab in the sense isolated network. So isolated network बहुत major trick है malware analysis के लिए। ठीक है, we trying to bluff the malware। ठीक है, उसको हम ऐसे pretend कराते हैं कि यहाँ भी तुम एक familiar environment में, real environment में, जहाँ इंटरनेट भी चल रहा है, सब काम हो रहा है, तो मालवेयर क्या करता है कि ठीक है नेटवर्क भी चल रहा है, सब चल रहा है, इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट, इस टाइप से। तो मालवेयर बहुत स्मार्ट होते हैं, जो भी स्क्रिप्ट करता है दे आर स्मार्ट इनफ। ओके, सो उनको हमें ब्लफ करना होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स टू ब्लफ। समटाइम बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं जिनको ऑलरेडी पता लग जाता है कि हाँ वी आर इनसाइड द वीएम मशीन, सो दे आर नॉट एक्सपोजिंग देयर सेल्फ। ठीक है, तो उसको भी हमें ट्रिक करना पड़ता है कि हाँ भाई किस टाइप से ट्रिक करना है। सो जब हम वो करेंगे तो वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कटर है। अब डिकम्पाइल की बात करी थी किसी ने शायद, आई थिंक यू द वन मिलन, राइट? ओके, सो आई एम जस्ट गोना ओपन दिस थिंग। Do we use a bridge connection, Yobin, for this? No, we're gonna use the host only. Okay, okay, let me just share my whole screen, then you guys can see. Okay, you can see my screen properly. Yes. Okay, as you can see, there is a, okay, you have to create your custom network. Okay, then you have to connect with the host only. This also VMnet 11 host only, and my Kali Linux also is connected on the VMnet 11 only. Okay, so these two machines are able to talk with each other, not others. Okay, so that's how you need to create. If you connect with the bridge, no, it's not gonna work. Okay. Got it. Got it. So basically आपने एक isolated network between two VMs कर दिया, and you're trying to trick the malware into exposing itself. Okay. Right. So let's talk about the decompiling. So we have the tools called the cutter. ठीक है, cutter basically एक reverse engineering का tool है, but we are doing we can do the lot of things inside this tool. ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। For example, यहाँ से हम strings भी filter कर सकते हैं अगर आपके पास floss नहीं है। So yes, you can do like HTTP. You are able to see all the HTTPs like HTTP head, get, put, what is these all doing. Okay, so यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ filter आप already आपको पता होना चाहिए कि what we are looking for, like तो मालवेयर एनालिसिस बेसिकली होस्ट बेस और नेटवर्क बेस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर इनसे रिलेटेड कुछ मिला देन वी आर गुड टू गो, वी कैन नोट डाउन दैट थिंग इन आवर रिपोर्ट एंड वी जस्ट नीड टू रिकन्फर्म इन द डायनेमिक। डायनेमिक में हमें सिर्फ उसको कंफर्म करना होगा जो हमने नोट डाउन करा है। जब डायनेमिक करेंगे तो हम मैच करेंगे जो हमने स्ट्रिंग्स जो भी हमने ऑपरेशंस किए थे स्टैटिक में, दे आर सिमिलर और डिफर। अगर सिमिलर है देन वी कैन से वी आर रिकन्फर्म, तो पता चल जाएगा वैसे कि ठीक है जो भी हमने एनालिसिस करी है हम एनालिसिस राइट कर रहे हैं।
अगर कुछ भी कंफर्म नहीं होता है दैट मीन वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ, जो भी हमने एनालिसिस करी है वो गलत करी है। ओके ठीक है। सो कटर टूल अच्छा टूल है, ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग्स फिल्टर करने के लिए भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें डैशबोर्ड पे भी हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, P64 सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, व्हाट आर द लाइब्रेरीज गेटिंग यूज्ड बाय दिस executable file. Okay, so yeah, we are also getting the hashes, entropy also we are getting, yeah, there is the entropy, ठीक है। तो yeah, you guys can also use the cutter, and most important एक पूरा प्लेटफॉर्म है फ्लेयर करके, फ्लेयर VM, that is the good tool for the malware analysis. Also the remnux tool, I mean OS, these are the OS. Okay, and decompiling, okay, we are talking about, so what we're trying to do, we're not decompiling exactly that rat. Okay, we're just trying to extract the informations in basis of the statics and in basis of the host and network base. Okay, so decompiling is a part of the reverse engineering. If we can't find anything on the strings, even on the dynamic, हमें स्टैटिक से भी कुछ नहीं मिला, हमने जब एग्जीक्यूट करा तब भी हमें कुछ नहीं मिला, कुछ समझ नहीं आया, कुछ मिला ही नहीं, मतलब कुछ सस्पिशियस मिला ही नहीं, तब हम कहाँ पे जंप करते हैं, अपने डिसम्बली पे, रिवर्स इंजीनियरिंग पे, फिर हमें यहाँ पे एनालाइज करना होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द अनदर थिंग। ठीक है, सो रिवर्स इंजीनियरिंग, हाँ ठीक है, मालवेयर एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट 20% रिवर्स इंजीनियरिंग का आइडिया होना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग इन द सेंस एटलीस्ट 20% तुम्हें असेंबली आनी चाहिए। ओके, देन या, so I hope the decompiling and the static and dynamic differences is clear. Okay, we have a question, how do we do analysis in Ubuntu environment? Yeah, it's the same, and same thing, for the Ubuntu you're gonna get the Oracle or any kind of the VM machine and you guys can good to go. Yeah, you have to set up, if you want to use the only the Linux for the malware analysis, then yeah, you can install all the tools on the your Ubuntu, but still it's not a good idea, कोई अच्छा आइडिया नहीं कि अपने मेन मशीन में आप सब टूल्स इंस्टॉल करके और वहीं पे टेस्ट कर रहे हो, देन RIP टू योर लैपटॉप, आई थिंक यू हैव इनफ मनी टू बाय अनदर लैपटॉप। Okay, so let's jump. Okay, guys, ask the questions when I ask, like when I ask, like, okay, if I have someone have any query. Okay, so cutter is clear, so I think that's how we can analyze the strings. Okay, and this is the easiest way, you guys can use the cutters, and also you can use the floss tool to extract the all strings, and how you gonna analyze these strings in basis of the host base और network base. नेटवर्क बेस से रिलेटेड कुछ भी स्ट्रिंग मिलती है ना, HTTP करके या IP करके, IP एडर करके, IP बफर करके, खुद सोचो कि होस्ट बेस मतलब कोई भी EXE फाइल, कोई भी पाथ, ठीक है, होस्ट बेस हो सकता है। अब नेटवर्क बेस कुछ भी IP हो सकती है, एज आई सेड, कुछ भी HTTP हो सकता है, एज यू कैन सी दी हियर वी हैव द कनेक्शन कीप अलाइव, दिस इज रिलेटेड टू द नेटवर्क। कनेक्शन किस चीज का अलाइव रख रहा है, कोई कनेक्शन का होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड वी हैव सम पोस्ट मेथड आल्सो, पुट मेथड आल्सो, राइट, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द network, it is making the connection. We have the HTTP user agent is related to the network. If you guys know how to use the burp suite, and if you guys see what kind of the user agents getting used, कभी जब आप Wireshark ऑन करते हो तो वहां पे दिख जाता है कि हाँ यूजर एजेंट ये रहा, Mozilla 5.0 यूजर एजेंट नेम करके रहा, तो हमारा बेसिकली यूजर एजेंट यहाँ पे नेम करके कुछ है, टेबल नेम इस नाम से होगा, ठीक है। वी विल रिकन्फर्म दिस थिंग आल्सो, ठीक है, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बट वी हैव टू नोट डाउन दैट थिंग। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? आई होप यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। Yes, sir. Okay, that's good, right? Okay, so let's move on. So string part is clear. So basically we did the static analysis. Okay, so we get the all the suspicious things from the speech studio and from these strings, and that's all we need from the beginners. That's it. If you want to be a pro, then you have to dig deep inside the malware, inside the each and every sections. Okay, so if I'm going to explain each and every section, like we have the DOS header, stub header, file header, optional header, that means we are digging deep inside the malware. Okay, not the malware, inside the file. Okay, okay, let's move on the dynamic. So for the static, what tool I use? Anyone?
For static, okay, let's say for static, what tools I used just now? Okay, I mean, you can speak, come on. Pradeep Kapoor, Mr. Kapoor Sahab, आप बोल सकते हो, you can unmute yourself and you can speak. Sorry, my friend, I've got a little baby who is crying back and forth. So that is the reason why I muted myself. I've had lots Okay, of questions. That okay, is the reason I didn't want to disturb the entire classroom. So that uh, is the reason I've been typing. Sorry about that. I've uh, got a 2-month-old boy who's continuously crying from, I mean, he's in next room. So he's just continuously crying. So okay, that's okay, why I don't okay, want to okay, disturb the okay, entire class. Sorry, man. okay, okay. You can throw your question in the last. Okay, Yeah, yeah. okay. So, okay, I use the basically P Studio, as a Kapoor Saab said, and Rohit also. Okay, P Studio, and I use the cutter, I use the floss. Okay, and there are a lot of tools for the static. Okay, let me just show you. Inside the flare, let's go to the utility. So we have the P view, P bear, PID. Okay, these are the for the static. Okay, there are a lot of tools, but it depend on like on you, like how you gonna use that those tools for yourself. Okay, so depend करता है कि आप किस तरह से उन चीजों का यूज करते हो, उन टूल से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, so one tool can be enough for you, or maybe one tool is not enough for you. It depend on you, it depend on your style, like how you analyze. Okay, and each malware analysis, each analysis have a different style. Okay, but the target still the same. हमें एनालाइज करना होता है कि फाइंड आउट करना होता है कि क्या गलत होना जा रहा है इसके साथ, या क्या गलत चीज कंटेन कर रखी है इसने अपने साथ. ओके, so let's jump on the dynamic. And for dynamic, we have a lot of tools also. And let me just close these things. Okay, I'm gonna keep this one, I'm gonna close the cutter. Let's close this one also. So for dynamic, basically I use the TCP, as I explained on the very first. TCP, process monitor, and process hacker. Okay, so these three tools I'm going to use. And inside the Kali, I'm going to use the we're going to also set up the inet sim fake internet, which is already set up. Okay, so I hope you guys like thinking about what is the inet sim. Inet sim is nothing. Inet sim just providing fake internet to this window. Okay, so whatever I'm gonna run inside this, so our inet sim gonna reply. So let me just open the Chrome. Let me type anything, and let's hit enter, and our inet sim will reply. So inet sim is basically providing each. Yeah, do we use that in honeypot inet sim? Inet sim, no, I don't think so. You can use on honeypot. It is just providing a fake. Yeah, we can use, but it depends like how you're gonna use. Okay, but in malware analysis, we just bluffing that malware to, okay, your port is open. If you want to reach the FTP port, then we already have the FTP open. If you want to reach the SMTP, we already have opened the SMTP port, right? So this is why we need the inet sim, and we also have the fake internet. Okay, so fake internet, inet sim are providing the fake internet, so that malware or any kind of the suspicious file और कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको लगे कि हाँ भाई नेट चल रहा है, चलो भाई काम करते हैं. ठीक है, so these are the tools basically I'm going to use. And the strongest tool is the process monitor. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है हमारा प्रोसेस मॉनिटर. हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं बहुत इजीली हर चीज, प्रोसेस को, एक स्पेसिफिक प्रोसेस को भी हम पॉइंट आउट करके हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उस चीज को. सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक I hope you guys know why we need malware analysis. Before dynamic, I'm gonna ask this question. I hope you all guys aware about that thing. What is malware analysis and why we need, and कहाँ पे जरूरत पड़ती है, और किस कंपनी में तुम्हें जॉब मिल सकती है. I hope that's why you guys here, right? Please speak something. Okay, I mean say something. Just don't be just keep silent. Yes, sir. Uh, but Okay. I'm just trying to understand. I mean, if my antivirus has, from a developer standpoint, if the antivirus has already isolated the malware
why do I mean, why do I need to do the R&D on that malware? It'll just be put into the, it'll just be deleted by the antivirus, right? So Okay, okay, good question. a very Okay. basic question. Yeah, this is a very good question. Okay, so I hope you also guys getting the update for the antivirus, right? Yes. Why we get the update, if you know anything? Okay, so now you're getting into कि कहाँ पे job मिल सकती है. नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो इसको छोड़ो। आई मीन चलो फिर स्टार्ट करते हैं डायनेमिक। आई होप यू गाइस को सबको पता है कि यहाँ भी किस टाइप से करते हैं। आई मीन जॉब कहाँ मिल सकती है, कहाँ आपका अप्रोच होगा, कौन सी कंपनीज एक्चुअली हायर करती हैं और हमारा काम क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली मालवेयर एनालिसिस, कोई भी एक फाइल आती है, फॉर एग्जांपल एक इन कॉर्पोरेट एरिया, वी गाइस हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो माल हर एक एम्प्लॉयज के पास मेल आता है, राइट। सो नाउ इट डिपेंड ऑन दी, उस जिस एम्प्लॉय के पास मेल आया है उसके साथ क्या अटैच्ड है फाइल, ठीक है। इट माइट बी डॉट ई फाइल, बिकॉज हर दिन बहुत सारे अटैक्स होते हैं, राइट। एंड पॉसिबली अटैक होते हैं फिशिंग के थ्रू, राइट। तो फिशिंग के थ्रू किस टाइप से होंगे, या तो लिंक क्लिक करवाएंगे या कोई फाइल अटैच करके देंगे, कोई भी इमेज, कोई भी EXE फाइल किसी फॉर्म में भी दे सकते हैं, राइट। सो मालवेयर एनालिसिस का काम क्या होता है, उस चीज को एनालाइज करना, जो भी चीज आई है दैट इज द लेजिट थिंग और नॉट। सो वी जस्ट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट EXE फाइल एंड P फाइल और नॉन P फाइल, वी कैन से कोई भी PDF डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, और कोई भी EXE फाइल, ठीक है। अगर इस टाइप की फाइल्स आती हैं वो हम इस टाइम एनालाइज कर रहे हैं। इस टाइप की फाइल आती है, देन व्हाट आर वी गोना डू, कि हमारी अप्रोच क्या होगी उस चीज को वैलिड करने के लिए, ठीक है। कि अगर बिल्कुल नया वायरस है, देन फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मेल आया आपके कंपनी में किसी सीनियर के पास एंड ही जस्ट ओपन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, देन वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है, वर्नेबल हो गई आपकी कंपनी, सिंपल। अब उस सैंपल को एनालाइज करना हमारा काम होता है, ठीक है। अब वो हमें देंगे उठा के, अब उसको हम एनालाइज करेंगे। अगर बिल्कुल नया है तो उसके लिए फिर हमें नए तरीके से, नए तरीके इन द सेंस कि हमें अपने स्टाइल में एनालाइज करना होगा, सारे IOCs निकाले होंगे, होस्ट बेस नेटवर्क बेस रिकन्फर्म करने होंगे, ठीक है। फिर अगर रिकन्फर्म होगा और हमें पता चल गया कि बेसिकली ये कर रहा है, रिवर्स शेल दे रहा है या कुछ गलत कर रहा है, देन वी आर जस्ट सेइंग, हम एक रिपोर्ट तैयार कंक्लूजन दे देंगे कि हाँ दैट इज द मिलीशियस थिंग, और उसका एक हम सिग्नेचर राइट करके एक अलर्ट जनरेट कर देंगे, विच इज वी आर राइटिंग अ सिग्नेचर राइटिंग और यारा रूल, ठीक है। वो अपडेट हो जाएगा ग्लोबली, ठीक है। अब वो ग्लोबली हर एक, जब भी किसी भी सिस्टम में अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा एंटीवायरस अपडेट नहीं है और उस टाइप का अटैक तुम्हारे पर हुआ, तो यू आल्सो, योर कंप्यूटर आल्सो गोना बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। जब तक आप अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करोगे, जब तक वो डेटाबेस नहीं लेगा कि हाँ इस टाइप का सिग्नेचर आता है, देन वी हैव टू पॉप अप दैट इज द मिलीशियस फाइल, ठीक है। तभी वो करेगा ब्लॉक उसको, अदरवाइज नहीं करेगा, अलाउ कर देगा। तो इसी वजह से अपडेट्स आते हैं, इसी वजह से पॉपअप आते हैं, बिकॉज ऑफ द एवरी डे वी आर ट्राइंग टू फाइंड द न्यू मालवेयर और सिग्नेचर नए नए बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही काम होता है सारा मालवेयर एनालिसिस का किसी भी कंपनी में लेजिट तरीके से। सो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स एक्चुअली, वी आल्सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट, okay, so Microsoft also use some Microsoft 365 Defender, which is the automated tool, ठीक है। वो यूज करता है, वहाँ क्या करता है Microsoft ऑलरेडी, बेसिकली सिग्नेचर राइटिंग इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो Microsoft अपना क्या करता है, ऑलरेडी उनके पास एक रिटन रूल है, whenever they find any kind of the suspicious thing, they will generate a signature and they will push the alert पूरे कॉर्पोरेट एरिया में, ठीक है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क फॉर malware analysis, ठीक है। So let's jump on the dynamic. Yeah. So we have the process monitor. It's a really strong tool. Okay. So यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हर एक फाइल को हम फिल्टर कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, शोइंग प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पे फाइल कैप्चर होती है, इवेंट कैप्चर हो रहे हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस दैट मच, so we're gonna just stop by clicking this button and we're just gonna clear our session. Okay, and we have already running the TCP. First we're gonna try to find out without internet, so let me just pause this machine. So now our internet is not working. Okay, and this is the filter. We can use this filter for analyzing a specific file, and हमारे पास बहुत सारे ड्रॉप्स डाउन है यहाँ पे। हम आर्किटेक्चर टाइप से भी सर्च कर सकते हैं, डिटेल्स डाल के भी, प्रोसेस ID करके भी, प्रोसेस नेम करके भी, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोना डू द प्रोसेस नेम। प्रोसेस नेम हमारा क्या है, रेड डॉट अननोन करके। प्रोसेस नेम इज, लेट्स सी,
फाइल नेम क्या है हमारा? Let me just copy this thing. Let me just paste red.unknown.exe. ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड हो गया है, अप्लाई कर देते हैं। अब हम जब इसको रन कराएंगे तो ये सिंपल इससे रिलेटेड ही सारी प्रोसेस दिखाएगा, कुछ अदर नहीं दिखाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाई द प्रोसेस मॉनिटर इज रियली स्ट्रांग टूल। सो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज लाइक कि क्या करता है, देखते हैं विदाउट इंटरनेट रन करते हैं क्या करता है। टीसीपी व्यू पे भी हम थोड़ा नजर रखेंगे कि कुछ नेटवर्क एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और अपना प्रोसेस मॉनिटर तो है ही। ओके, प्रोसेस हैकर विल शो लाइक अगर कोई प्रोसेस रन हो गई है तो यहाँ हम देख सकते हैं इसलिए कि प्रोसेस रन हुई तो उसका पेरेंट पीआईडी क्या है और उसकी चाइल्ड और पेरेंट जो भी है प्रोसेस के क्या है। ठीक है, ओके, सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस फाइल एंड रिमेंबर मैंने इंटरनेट ऑन नहीं करा है। एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट कैप्चरिंग, आई एम कैप्चरिंग फाइल एंड लेट मी जस्ट रन दिस थिंग। सो यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत सारी प्रोसेस ऑलरेडी कैप्चर हो गई है। एंड टीसीपी पे देखते हैं कुछ कनेक्शन नहीं बना है रेड डॉट अननोन के नाम से। नो, okay, so it's running basically. Okay, and it's running and we didn't get anything on the TCP, right? Okay, we have an error message no soup for you, which is the message box. And let's reconfirm this what we find before. Let me just control F, no soup for you, not you. Okay, wait, let me just go down. Okay, now we are reconfirming the message error message box. So we have the message box which is related to this, and we have the written message no soup for you. So what did that mean? इसका मतलब हुआ कि ठीक है यार, इसने इंटरनेट, हमने पहले विदाउट इंटरनेट करा तो इसने डिटेक्ट कर लिया। नाउ यू आर थिंकिंग लाइक कि हाँ मालवेयर बहुत स्मार्ट है। यहाँ पे इसने क्या करा, पिंग करा और एक मैसेज बॉक्स को दे दिया, भाई तुम्हारे लिए कोई सूप नहीं है, कुछ तुम्हारे लिए नहीं यहाँ पे। सो इट नॉट रनिंग एग्जैक्टली, कुछ इसने किया ही नहीं है हमारे सिस्टम में, बट इतने देखा, चेक करा और बस डन, खत्म। ठीक है, सो नाउ वी कैन से हाँ ठीक है, इसने देखा, एक मैसेज बॉक्स दे दिया और इट माइट बी, और इसने टीसीपी पे भी कोई भी कनेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करा है। सो इट माइट ट्राई टू चेक द कनेक्शन, इट ट्राइंग टू चेक दी इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं है, वो चेक कर रहा है। नहीं आया तो इसने हमें क्या करा, एक मैसेज बॉक्स दे दिया। ठीक है, सिंपल। और दूसरी कंडीशन में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, सो डोंट जस्ट स्क्रिप्ट दिस थिंग, इसको रटना नहीं है, बस इसको समझना है कि किस टाइप से होता है। ठीक है, कुछ और कंडीशन में कुछ किसी और टाइप से आ सकता है। ठीक है, इट माइट बी मैसेज बॉक्स ना आके कुछ कहीं और खुद को डिलीट करवा रहा हो। ठीक है, तो बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं मालवेयर्स की। ठीक है, सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप फंक्शनलिटी से अवेयर होगे और उतने ही आप आर एक्यूरेटिंग इन डूइंग द मालवेयर एनालिसिस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। लेट्स चेक हियर कि हमने प्रोसेस मॉनिटर में क्या कैप्चर करा है। सो दीज आर द थिंग्स एज यू कैन सी ऑन द टॉप। यहाँ से हमारा क्या हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, थ्रेड क्रिएट हो गया। अब थ्रेड, आई होप यू गाइस नो कि थ्रेड होता है क्या। मैंने अभी एक्सप्लेन करा था कि हर एक प्रोसेस की आईडी बनी होती है और हर एक मतलब सीपीयू पॉइंट आउट करता है कि ठीक है ये प्रोसेस जानी है, कर्नल को देता है, ठीक है, और मेमोरी में लोड होता है। सो दैट्स हाउ अ थ्रेड वर्किंग। ठीक है, सो ये जो पॉइंट आउट दिख रहा है ये हमारे रजिस्ट्री के लिए है और क्या फोल्डर क्रिएट हुआ है और क्या नेटवर्क हुआ है। तो लेट्स सी द नेटवर्क एक्टिविटी। नेटवर्क एक्टिविटी में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार और फिर से रन करते हैं, लेट्स चेक कि नेटवर्क एक्टिविटी कुछ होती है। ओके, okay, so it's not even showing anything here. Okay, because of कोई बस इसने क्या करा होगा, चेक करा होगा कि नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, but it's showing somewhere else. We will trying to find out like why. ठीक है, so there is nothing and we have the only the folder. What are the folders are accessing by this kind of red dot unknown. So यहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाता है। Let's trying to find out .exe because हमने एक exe find out करा था। नहीं, exe नहीं है, creating file which is .pf which is relatable to this file, but we not able to find out. Let's try to search out this name कि ये कब ड्रॉप करेगा और अभी करा है या फिर no. Okay, let's try to find out this one. Okay, no. ठीक है,
ठीक है, अभी इसने कुछ भी ड्रॉप नहीं करा आई थिंक. ओके, सो लेट्स रन दिस थिंग विद इंटरनेट. सो हमें सिर्फ एक ही कंफर्मेशन मिली है, एक नो सु फॉर यू करके था, ठीक है, और बाकी हमारी क्या हुई, थ्रेड क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, और रजिस्ट्रीज पता चली क्या क्या यूज हो रही है. दैट्स इट. If you guys gonna like dig deep inside the registry, you will find a lot of things. So it is a time consuming topic. अगर आप डेप्थ में अगर सीखना चाहते हो, so हर एक registry की will speak a lot. Okay, so let's do with the internet connection. Let me just realign my Kali Linux. Okay, let me just check my internet again. Okay, let me just clean this also. Okay, and yeah, we are good to go. Okay, let me just reconfirm my internet is working, fake internet. Okay, it's working. So now we have the fake internet also. We are gonna capture this thing, start capturing. Let's run this thing. Let's start capturing. And as you can see on the TCP, we have the red dot unknown. It's creating a connection. Local port on the 555 and it's listening on 00. I mean, it is able to listen in any local address, okay? Hindi. Okay, so okay, we are confirm a TCP connection here, which is on the 555, and let's check network connection is built. Yes, now you can see the network connection is built. It is received something, and the response from the inet sim. Response हमारा कहाँ से आया, inet sim के through आया है, ठीक है. अब अरे यार एक चीज तो भूल ही गए हम, वायर शार्क ऑन करना. Okay, no worries. Let's do the again. Okay, it is capturing things. So I'm gonna run this thing one more time because Wireshark ने capture नहीं करा था, ठीक है. So you guys might be confused. यहाँ पे दो बार red dot unknown process आने वाली है और ये double बार आने वाली है. So don't be just confused. I'm just gonna run, and there you go. And we are also capturing something on the Wireshark. Good. Okay. Okay. So it make connection, and we are interested in our this one. Okay. Let's see. This is dropped or not. Let's see msdcodelib.exe. Okay, so let me just search this thing. Okay, we have not yet. mscore.lib is didn't mscore. Let me just paste. Okay, we have something. So we have dropped something here, mscore.dls, and we are reconfirm this thing. So as a malware analysis, हम क्या करेंगे, इसका screenshot लेके रख लेंगे, ठीक है. mscore.dl, I mean dll.exe has been dropped somewhere roaming Microsoft. Let's check out this folder. Let me just check out this folder. It is successfully create. Let me just copy this thing. Let me just go here. Tell the program. So we're just gonna jump on that thing. Let me just clean the. So we are here. Let me go in the startup, and we have this one thing dropped. And if we open this thing, and this is the from iNetSim. iNetSim ने सब कुछ प्रोवाइड करा दिया. बेसिकली कुछ भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो iNetSim प्रोवाइड कर देता है कि ठीक है, इसको ये चाहिए दे दो, इसको आलू चाहिए दे दो, बैंगन चाहिए दे दो, ठीक है. जो भी इसको वेबसाइट चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये दे देता है. ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. आई मीन द कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि क्या चल रहा है. गाइस स्पीक समथिंग. मिलन, रोहित, एनीवन, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है. डायनेमिक.
Okay, I think. Phew, okay. If you're not there to speak anything, then type. Okay, Abhishek. Okay, yes, sir. Okay, good. Okay, perfect. At least someone understanding this thing. Okay, perfect. So we have a drop down here and we can take the screenshot and we can write it in our report. And we have being our reconfirmation. Okay, so reconfirm हमने करे हैं host based indicators basically. ठीक है, तो ये host based indicator के अंदर आता है. So we are analyzing perfectly. Okay, जो भी हमारी analyze है एक right path पे है. Okay, so and what else? TCP पे हमें इसने connection provide किए थे, which is on the port 555 somewhere else. Okay, so let's jump on the Kali Linux. Let's examine this thing. So I think you guys know how to use the Wireshark. Wireshark सबको use करना आता हो, मैं ऐसा assume करके चल रहा हूँ, ठीक है. So we have a lot of command in the Wireshark. ठीक है, फ्रेम कंटेन, फ्रेम मैचेस करके हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं. ठीक है, तो इनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं पैकेट्स बेसिकली. सो आई एम गोना यूज फ्रेम कंटेन. ओके, फ्रेम contains, let's see what I'm gonna ms core dll. So there is nothing. Let's see the ms frame. Oh, we find out also URL, right? This one, HTTP. Okay, so let's try to, we will look that also. Let's try to find out this one executable file, mscorelib.exe. Let's jump on this thing also. Frame ma matches.exe. Let's search .exe. So we have exe, right? As you can see. So this is the another confirmation and this will fall in the network based indicators. So हम इसको ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई इसने क्या करा है, गेट रिक्वेस्ट दी है. ठीक है, आप अगर इसको अच्छे से स्टडी करना चाहते हो देन यू विल फाइंड आउट देयर इज गेट रिक्वेस्ट इन आवर स्ट्रिंग्स. ठीक है, इसने क्या करा है, mscorelib.exe पूछ रहा है. और अब let me just show you in the, हाँ ठीक है. So get mscorelib.exe which is the HTTP 1.1. If you can guys look in closely, 1.1 HTTP 1.1 somewhere I found out. ठीक है, HTTP 1.1 and let's check the again. The name is really clear here and the user agent nim HTTP client. Let's check the nim HTTP client. If we have nim HTTP client, so we are reconfirming again the network based indicators. Okay, so yeah, perfect. So यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हमने नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स फाइंड आउट कर लिए. ये हमारे पास URL था serv1 ec2 102.95 करके है. So let's check. Okay, serv ec2 102.95 ubuntu.local. Okay, so we are on the right path. We are doing a good analysis here. So यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर हमने कंफर्म कर लिया. इसने इसको क्या करा, देखा, चेक करा और इसने इससे mscore.lib मांगा और वहां पे क्या करा, हमारी विंडो में इसने ड्रॉप कर दिया mscore DLL which is a second stage of the malware. ओके, जो कांड करेगा यही करने वाला है. ठीक है, वो तो सिर्फ एक तरीका था. अब यहाँ पे हमारा क्या कनेक्शन है, एक कनेक्शन बन रखा है 55 पोर्ट नंबर पे. अब हम देखना चाहेंगे कि बेसिकली करना क्या चाहते हैं, पोर्ट ओपन क्यों है, क्या कर क्या रहा है बेसिकली. ठीक है, सो फॉर दैट लेट्स सी. Okay, we confirm so many indicators. Let me just close this, minimize this thing. So we're gonna try to gain the reverse shell. Okay, so let's try this thing and I hope you guys use the netcat, right? I'm just hoping you guys use the netcat. If you guys familiar with that, just you guys can message. Anyone? No, I think. Okay, okay, so let's try
what is exactly doing? So we have I'm going to use the netcat command nc -nv. Okay, this is the IP. So if I'm going to check, I'm going to show you the IP. Okay, if config, so 19830. Okay, this is the IP, and the port I write down here, it is the similar what we find out in the TCP. Okay, the port number 555, and let's check if this one is giving us access. Okay, so let's see. Connection refuse. Say the connection refuse. Let's see what exactly happening here. So it said the connection refuse. So please repeat that. Okay. Akash Jha. So can you please tell me? I mean, what exactly part you're missing, Mr. Akash? फिर एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन करा है और आई डोंट नो कि आप अभी क्या पढ़ा रहे हो, सो कैन यू प्लीज रिपीट दैट व्हाट यू आर टीचिंग? Okay, it's a long session, we covered. I don't think so. We're gonna cover all the things, but I'm gonna give up idea कि हाँ चल क्या रहा है, ठीक है? So ठीक है, so I will give you overview in the last. Is it okay? Okay, sir. Okay, so let me just try again. अरे बता दो सर क्या दिक्कत है, बता दो ना. Okay, for your kind information, I will, it's a long session, as I said, so it will take a long time to explain what exactly what we did till now. So I will give you over. बताओ. टाइम है, बता दो. काफी टाइम नहीं है. ऊपर 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 से बता दो कि आपने लाइक क्या बताया था, क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाई थी. Okay, so I think we have 15 minutes, I guess, for this session, so I'm gonna explain in just 2 minutes. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, what are we doing here? Malware analysis, and I hope you guys know in malware analysis we have the two type of. Okay, what are you saying? ठीक है, recording share हो जाएगी आपको. Okay, after session, yeah, thank you. Okay, so what we doing exactly malware analysis. Okay, and in malware analysis we have the two type of the analysis: static, dynamic. And static we do the without executing, and in dynamic we just executing the samples. And in static we have a lot of tools like P Studio and all the things we use for the extracting the information. We are extracting the raw data. Okay, and we are just extract the all information, all the suspicious strings on basis of the logical relatable thinking in basis of the IOCs. Okay, and after that we did the dynamic. We're performing the dynamic and performing dynamic through the process monitor, Wireshark, and the Kali Linux. Okay, so we just perform the dynamic. We just reconfirm the network based indicator, which is the drop down malware at second stage, ms core dlls.exe. Okay, so now we are trying to gain the reverse shell for that thing. So let me just try nvlp. Okay, listening on 192, any 192. Okay, so let me just type anything. What it's gonna do, it not saying anything. Okay, let me just execute this again. We're not getting anything. Okay, better we trying to take reverse shell here in this. Okay, so let's try nc-nv, and the IP is
192 point. Okay. 192.168.183 point. Let me check. 129, I guess 129. Okay, I need to give the port. No, NC netcat. Okay, I need to run the netcat. Okay, so it gave us a weird text, and we have the connection. Okay, so I just use the simple netcat, and it just shows us some random text. And as you can see on this, so base 64 kiska hai, Manish? Yeah, this is the base 64 basically. Okay, so let's try to encode this thing. Okay, so you guys can use the, wait. Okay, so let's, okay, wait, hold on. Let me just open another CMDR. So ये जो base 64 है basically क्या है क्या रहा है, let's see. Let me just copy this thing. So we have the command, let's use the echo and colon. Okay, and pipe, and let's see the base 64 -d. Okay, let me just try this thing in the base 64. It just shows the base 64. Okay, it's not executing it. So let me just try this thing in the Kali Linux. So basically it's saying something, or we can use the internet also. So why are we not getting the reverse shell here? Okay, the IP is 129, sorry. Okay. Okay. Open, but it's not listening. Let me just re-execute that thing. Let's see. Let me just try something. Now we're not able to get the reverse shell on the Kali, but we are successfully get the reverse shell in our main, I mean on the machine. Okay, so yeah, so let me just try how we can encode. We can use the online platform also. Okay, so what we can do here, let me just try to encode this thing, because this said something. Let me just try to find out the command for that thing. You guys can use the online platform to encode this thing, and you will get something. And I think I can copy this one. Okay, just let me just try one more time. Just pasting there. Paste selection. No, it's not gonna paste to the clipboard. It's just place something else. Okay. Oh, okay. No issue. I need to run the internet on the, I need to type this whole base 64. So it would set something definitely. So the logic is we get the reverse shell from it, and it might set something there. The session will be incomplete if this will be not encoded. Okay, let me just find this thing, how we can do. Okay, guys, you also can try to encode this thing, and if you guys find out the any command, then let's try. And you guys can also use the base 64 decoder online, but I don't know why it's not working in my system. I think it might be a problem for the tools. Okay, so yeah, I mean, we get exactly the reverse, and let's skip this thing because I'm having some problem with that thing.
So yeah, I hope you guys understand the things and understand the idea behind the malware analysis. Okay. And if you guys have any query, you guys can ask, because we are done with the analysis. Because okay, so you guys can practice these things from your end, and you can guys try to encode these things on the base64 decoder. Okay, and you guys can use the calculator also for that thing. Okay, if you guys have any query, कोई भी अगर question है, you guys can ask. So guys, I think you guys don't have any query, so we can end the session here. If you now, where is the Kapoor Saab? Kapoor Saab, you have a lot of question now. You can throw. Anyone? I think no one. Okay, so yeah, that's it for the session. Okay, okay, I will try to cover this and code it, because we have just 7 minutes left for the session. So it might take time to fix this, like why it's not encoding things. Okay, so I will cover this. Yeah, I did that thing. Okay, so there is a one command that let me just try in command also. Let me just try this thing. Echo and our code. Let's say pipe base 64 and -d. No, it's not. So I will check this thing, and I will try to cover this thing in the next session. Okay. So yeah. Just let me try to run another. Sir, you are not audible. Okay, okay. So I'm just trying -n. Let me try just. Okay, no, it's not, this command also not working. Okay, so yeah, I'm gonna resolve this thing, and we'll cover this thing in the next session. Okay, let's see now it's running or not. No, it's not. Okay, so we will cover this thing in next session. Okay, so let's end this session. I hope you guys all understand this thing. If you guys want me to repeat this session, I mean in just 3 minutes, then Sir, you are not audible. am I audible now? Am I audible? Yeah. Good. Sir, your voice is fluctuating. Wait, now good. Yes, sir, now perfect. Okay, so let me try on this CMDR one more time. If we solve this thing, then good. Otherwise, we are done here. Come on, work. Invalid input said the base 64. Let me just check without hyphen. Okay, it's just gonna print this thing. Let me just -n. It's in Kali it work, but now it's not working. We'll resolve this in next session. Okay, so guys, if you have any question, please ask. Anyone? Okay, so
No one want me to repeat? No one. Okay, so I'm gonna end this session here. Okay. So, okay. Hope you guys just have a great day ahead and take care. Okay. Okay. Bye bye, guys. Thank you, sir. Bye, sir. Okay. Take care. Have a nice day, you too. Okay. Bye.